My God. Hello? Hello? Yes, sir. I hope my voice was not audible, right? Very sorry. Okay, I'll start it again. My dear friends, today we have to see the unit number 6, that is NoSQL. It is actually dealing with NoSQL databases. I've already told you that it has various new technologies like big data and Hadoop, and that we have to study today. This is what the course outcome of unit number 6, that is students should able to use advanced database programming concepts like big data, and the technology which is supporting big data is Hadoop. My dear students, at the end of this unit number 6, you should able to program on advanced programming concepts like big data and Hadoop. This is what the outline of today's presentation, where introduction to NoSQL database will be covered first. Then we'll focus on types and example of NoSQL databases. So it is also known as the various data models of NoSQL. Then we'll go with CAP theorem and base properties. Then we'll go with comparative study of SQL and NoSQL, one of the very famous question in University of Pune question paper. Then we'll focus on various data models, case study of structured and unstructured data for social media. And finally, we'll end up with introduction to database, Hadoop, HDFS, and MapReduce. This is what the overall syllabus of your unit number 6. Today, we will deal with introduction to NoSQL databases, and we'll cover some of the examples of NoSQL databases. So my dear friends, NoSQL is non-relational DBMS. So no stands for not only SQL. You need to understand that no SQL, okay, here no means SQL नहीं है, ऐसा नहीं है. No means what? Not only SQL. Okay, not only SQL. यानी यहाँ पर SQL जो भी है वो तो रहेगा ही रहेगा नो SQL में, उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें रहेगी. तो आप लोगों को शायद याद होगा SQL, I can say that SQL is subset of NoSQL. Okay, SQL is subset of NoSQL. So this you need to understand, my dear students. Okay, this is very important. So NoSQL is non-relational DBMS. Okay, so NoSQL is normally used for big data real-time web applications. So you all are aware about big data nowadays. Everyone is using big data, and NoSQL is one of the supporting language for the same. If you observe this NoSQL, it has various features like it is supporting to database like non-relational database. It supports structured as well as unstructured and semi-structured data. Okay, so what exactly is structured data, semi-structured data, and unstructured data, that I'll cover. Then it also supports the technology like big data, scaling, and no doubt it gives you great performance while retrieving your data. So this is what all about NoSQL. Let's move further. That will tell us some more details about NoSQL. So before we start with NoSQL, you all are aware about relational database, where entire thing were in the form of table. We have seen this particular part while MySQL commands. You have used create table command, then you have inserted data into it, you have deleted it, you have updated it. Whatever you have done everything with relation, that is ultimately table. Now NoSQL is saying that it is NoSQL means not relational. It is not a relational database. Okay, it is not only SQL. So it will not be in the form of table. So what kind of data model which will be behind this particular NoSQL, that we will study. So when we are talking about relational data model, there will be we normally do some analytics, and that analytics is possible using OLAP, that is online analytical processing. So SQL database is actually what it is supporting us for analysis of various database, whereas NoSQL database, it don't need any sort of normalization, anything. It actually supports what? It supports all your structured as well as what unstructured data. I'll definitely tell you about structured and unstructured data into subsequent slides. Regarding NoSQL database, it has some of the important, very, very important characteristics, or we can say advantages of what NoSQL database, or why one should use NoSQL database. So NoSQL database gives us high scalability. Scalability means what? कितने भी number of hardwares, कितने भी number of devices यदि आ गए, उसको वो क्या करेगा? Support करेगा. यानी we can able to perform a big operation using
high scalability, and that is supported by NoSQL. Then high availability. हाई अवेलेबिलिटी यानी क्या कि कहीं पे भी कितने भी फेल्यूर्स यहाँ पर आए, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जीमेल जीमेल के बहुत सारे सर्वर्स भी फेल होते हैं, उसके बावजूद भी जीमेल एवरी डे आप लोग ओपन करने की कोशिश करते हैं, वो ओपन होता है. दैट इज द रीजन इट इज हाईली अवेलेबल. इट्स अवेलेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई. Next is fast performance. You all have seen that whenever we are talking about, though there is 15 GB data available in your Gmail, okay, it is immediately opening all your emails and all your data. So I can say it is one of the what fast performance, and fast performance is supported by NoSQL. That's the beauty of what NoSQL. Again, easy replication. Replication is again very, very important. Replication, if it is more, then reliability will be what higher, and that is the reason we need to replicate the data. So you need to understand NoSQL database normally supports distributed database technology. Then finally, big data capability. We all are aware about the big data technology. This big data technology is telling us that we can able, like here, NoSQL is actually having what capability to support big data. So this is what all the features of NoSQL databases. I'll again summarize: high scalability, we can add any number of devices; high availability, though so many devices or servers are getting failed, but there is guarantee that you will get your data back. Fast performance, yes, its speed is very very high. Easy replication, as it is distributed database, so naturally possibility of replication will be very very easy. It supports big data capability. Now the types of NoSQL databases, so you can see that this is also known as data models of NoSQL. Okay, types of database and data model is one and the same concept. I'm again telling you that data models of NoSQL, okay, it is same like your type. Okay, so you need to understand this particular topic, that is types of NoSQL database and data models of NoSQL is one and the same concepts. So there are basically four data models in case of NoSQL. Very first one is your document uh, oriented data model or document based data model, column based data model, graph based data model, and key value pair data model. Each data model is useful, that depends on the application. So my dear friends, we'll go in depth what exactly is document based data model, what exactly is column based data model, what exactly is graph based data model, and what exactly is key value pair data model. So these are the four types of data models. Let's look at on what in depth knowledge what exactly all kinds of data models are all about. In examination, there are multiple times they have asked the questions on data model on NoSQL databases. Sometimes they may ask you a very specific question that explain document data model in depth of NoSQL. So that may happen, and that is the reason we need to go in depth. Now, example of NoSQL databases or NoSQL data model. So very first one is key value based data model. Key value based data model means what? Everything will be based on key and values. Means what? Suppose you all are aware that normally how we define roll number, and then we'll say colon, and then we'll say 101. Okay, then we'll say 01. It means that here roll number becomes key and 01 becomes what? Its value. So this is known as key value based data model. Okay, and the best example of key value data model nowadays, you might have seen Amazon is doing great job. Okay, in case of your online shopping, so Amazon is using DynamoDB, and this DynamoDB is nothing but the example of key value based data model. Okay, then Oracle NoSQL, this is again one of the very very great database which is normally used. And again, the last one is Redis. So these are the example of data model where key value based, these are all key value based data model. Next one is document based data model. You all are using MongoDB nowadays. Document based data model means what? Here entire data will be stored in the form of key and value, and here entire thing will be stored in the form of document. जो भी कुछ रहेगा वो document के form में क्या होगा? Store होगा, यानी जो भी हम लोगों को लिखना है इस document पे आप लोग लिखते जाओगे.
ओके और इस डॉक्यूमेंट के फॉर्म पे क्या होगा, ये यहां पर लिखा जाएगा. सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, एवरी रिकॉर्ड, वन रिकॉर्ड विल बी अवेलेबल विथ वन डॉक्यूमेंट. तो हम लोगों ने रिलेशनल डेटा मॉडल में जो सुना था कि एक रिकॉर्ड में हम पूरा एक इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, वैसे ही यहां पर क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट में पूरा इंफॉर्मेशन हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. एंड द एग्जाम्पल for this document based data model is your MongoDB, which you are actually using in your practical. Okay, so MongoDB is document based data model. Like that, there is CouchDB. It is one of the product of Apache and IBM cloud, and this is what the product of IBM, where nowadays you must be aware that this NoSQL database, all giant companies like Amazon, Oracle, okay, Apache, IBM, all are using NoSQL database, and soon entire shifting will be with what NoSQL databases. So dear students, there is great opportunity for you to make your career into this NoSQL databases. Now the third part is graph based database. Entire thing will be stored in the form of graph. यानी क्या, यहां पर यदि आप लोग देखोगे तो जो वन रिकॉर्ड विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ग्राफ. यानी व्हाट वी विल डू, यू नो, वी कैन एबल टू, लाइक, सपोज देयर इज इंफॉर्मेशन लाइक any of the record. So that record, this is, suppose this is what the record, another record, all these record will be linked by using what, graph. So that's the beauty of the graph based data model. So this you need to understand, this you need to understand the beauty of this particular graph based data model. So this can be what, this way we can able to create data model, and here we can write down the records of each and every thing. So this way it will manage. So graph based means what, it based, when I'm talking about the word based, it indicates that entire data will be stored in the form of what, graph. So this is what an idea behind it. Its example is infographics, sorry, infogrid, then infinite graph and neo4j. These are very famous databases, data models, which are example of what, this graph based data model, which is normally used into various companies. Okay, these and these are all, you know, like, these are all live example where people are still using this. Okay, because this particular technology just entered into 2012. Okay, and today we are in 2020. So now the development is done and you all can able to use it very effectively. लास्ट वन इज कॉलम बेस्ड डेटा मॉडल. तो रो बेस्ड डेटा मॉडल जो था वो था रिलेशनल डेटा मॉडल, बराबर है. वो क्या था, रो बेस्ड था, जहां पे रिकॉर्ड के फॉर्म में डेटा स्टोर करते थे. अब कॉलम के फॉर्म में डेटा को स्टोर करेंगे. तो आप लोगों को मैं यहाँ पे थोड़ा याद दिला दूं कि आप सभी लोगों ने ऑलरेडी क्या, किस चीज का स्टडी किया हुआ है. इफ यू रिमेंबर, आप लोगों ने 2 डायमेंशनल डेटा का जो भी काम किया है. ओके, तो 2 डायमेंशनल जो भी एरे होता है वो आप इधर रो के फॉर्म में, यानी रो वाइज डेटा को स्टोर कर सकते हैं. यानी मैट्रिक्स जो रहेगा उसको आप रो वाइज स्टोर करोगे या फिर कॉलम वाइज स्टोर करोगे. रो वाइज स्टोर करोगे यानी दैट बिकम्स योर रिलेशनल डेटा मॉडल. लेकिन यदि आप कॉलम वाइज स्टोर करोगे, यानी क्या, पूरे डेटाबेस में जो भी वैल्यूज है वो कैसे करोगे, फर्स्ट कॉलम का वैल्यू पहले स्टोर करोगे, फिर सेकंड कॉलम का वैल्यू स्टोर करोगे, फिर थर्ड कॉलम का वैल्यू स्टोर करोगे. इस तरीके से जो भी आप करोगे, दैट इज नोन एज column based data model, where entire data will be stored column wise. Best example for column based data model is Cassandra. This is actually included in your syllabus. HBase, this is one of the database which is actually supported by your Hadoop technology, and Hypertable, this is again one of the very famous databases which is normally supporting your column based data model. So my dear students, I'm again repeating for you all that these are the 4 data models used into what, it is heavily used into the industry of what, NoSQL. So NoSQL has basically 4 types of data model: key value based data model, document based data model, then graph based data model, and finally column based data model. Now we'll look out on what practical examples of NoSQL databases. So social networking sites, all social networking sites, including your Facebook, Instagram, all are using NoSQL database at backend. So entire data is nowadays is managed using NoSQL. Though you may take what, Facebook, you may take any damn example of social media site, all are using NoSQL database at backend.
session, all entire session is stored. You can see that in case of like when we session means what, suppose this is the session which is started, okay, at 10 a.m. and it will end, let's say, at 10:40 a.m. So entire session will be, that information data, entire video will be stored. This is known as what, session. So whenever we have to store any of the session, again backend of that particular part will be what, your NoSQL. So though you can take example of YouTube, again behind YouTube nowadays there is NoSQL database. Now mobile application, everyone, okay, you can see that nowadays entire mobile application development is now shifted towards what, the NoSQL databases. Online shopping sites like Amazon, Flipkart, all are using at the back end your online like your NoSQL. In case of you this e-commerce websites, you all are aware now, e-governance sites are there, e-commerce sites are there, all these are using NoSQL databases at the back end. Ad targeting, advertisement, this is again the biggest market, like Google AdSense, we have seen Google Advert, we have seen, all are using NoSQL database at back end. User profile information is also stored using NoSQL nowadays, because the parameter of users or the characteristics of the users will be very, very huge. Okay, it's not fixed at all nowadays, because the parameters and the talents of the user is now increasing day by day, and that is the reason we need at backend like NoSQL databases. Now, the important topic, again, this is normally asked into your university examination, CAP theorem. Okay, so this CAP theorem, CAP, okay, it stands for, C stands for consistency, A stands for availability, P stands for partition tolerance. Now you need to understand, as big data is one of the technology supported by using distributed databases. So naturally distributed database में आप लोगों ने partition जो भी है failure देखा हुआ था, यानी क्या, नेटवर्क को दो हिस्सों में क्या कर देना, तोड़ देना। तो एक जो नेटवर्क बना हुआ है वहां पे भी उनको लगेगा कि एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन चल रहा है, दूसरे नेटवर्क पे भी उसको लगेगा कि एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन चल रहा है। तो यदि आप यहां पर देखोगे तो यहां पे आपको एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, कंसिस्टेंसी मींस व्हाट, सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मींस व्हाट, हम लोगों ने x इज इक्वल टू 5 क्या किया है, स्टोर किया है। वी हैव स्टोर्ड x इज इक्वल टू 5, and if user is asking what is x now, it will tell us 5. This is known as consistency. Dear students, it is very, very important to understand the concept. Once you understand the concept, it will be very, very easy for you to understand the further thing. Okay, so consistency means what, when we are storing x is equal to 5, and when we ask what is x, it should return what, 5. It means that whatever we have stored, it is returning us. This is known as consistency, यानी सही डेटा आपको क्या करना चाहिए, उसने रिटर्न करना चाहिए। Next part is availability. Availability यानी क्या, if you are storing anything into cloud, एवरी टाइम इट शुड बी एसेसिबल टू यू। जैसे आप लोगों को मैंने आपको बताया ना, आपका जीमेल जो भी है, ओके, जब भी आप लॉगिन करते हैं सारे के सारे मेल्स आपको मिलते हैं, कितने भी पुराने मेल्स आप लोगों को मिल जाएंगे, जब तक आप कंपल्सरीली यानी कंप्लीटली उसको डिलीट ना कर दे, ट्रैश में से उसको निकाल ना दे, तब तक सारे के सारे चीजें आपके लिए अवेलेबल रहेगी। दैट इज नोन एज अवेलेबिलिटी। सो दिस इज द सेकेंड property of CAP, that is C stands for consistency, A stands for availability. Now finally the partition tolerance. पार्टीशन टॉलरेंस यानी क्या, जब भी ऐसा नेटवर्क आप लोगों का होता है, ओके, और ये नेटवर्क एक्चुअली क्या होता है, दो हिस्सों में बट गया है, एक तो यहां पर ये है और दूसरा आप लोगों को ये दो कंप्यूटर्स जो भी है वो दिखाई देंगे। तो ये दो कंप्यूटर जो भी दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी आएगा कि यहाँ पर हम लोगों का जो भी है, ये एक नेटवर्क बन गया और ये एक नेटवर्क बन गया, यानी नेटवर्क में क्या हो गया, पार्टीशन हो गया। ओके, पार्टीशन होने के बावजूद भी इसको दोनों का एक्सेस क्या रहेगा, यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, बिकॉज दिस काइंड ऑफ थिंग इज सपोर्टिंग अस with using partition tolerance। यानी पार्टीशन भी होगा तो भी उसको क्या कर लेगा, टॉलरेट कर लेगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कैप थ्योरम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ cap theorem. Here cap theorem is telling you that C stands for consistency, A stands for availability, P stands for partition tolerance. And this is what an example that I have given, one of the very good example that one of the author have created this particular image for you all. So this is consistency, this is availability, and this is partition tolerance. And from this particular diagram, you can very well understood the meaning of consistency, partition tolerance, and availability. Now we need to work out with what the theorem. Theorem is telling that any of the three property, which three property, this three properties which is there, okay, that is
either consistency or availability or partition tolerance. Out of this three, okay, out of this three, what we need to take, we need to understand out of these three properties, okay, of shared data system, that is data consistency, then system availability, then tolerance to network partition, that is partition tolerance. Any of two, it is important. Okay, any of two, okay, you can take combination of two. Okay, any of two can be achieved at any given moment. यानी क्या, either consistency और availability जो भी है इन दोनों को मिलके भी चलेगा, या फिर partition tolerance और availability भी चलेगा, या फिर consistency और partition tolerance भी चलेगा. एनी कॉम्बिनेशन शुड वर्क आउट. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में आपको डायग्राम दिखाऊंगा, वहां पे ये क्लैरिटी आएगा. तो कैप थ्योरम आपको क्या बता रहा है? कैप थ्योरम आपको ये बता रहा है कि इन तीनों में से कोई भी दो प्रॉपर्टीज आपके पास होने चाहिए. यदि वो है, वो यदि आप लोगों के मेंटेन होते हैं, यू कैन से दैट कैप थ्योरम इज वर्किंग फाइन. Okay, you need to understand about NoSQL database. The fact about NoSQL database, it provides you base property. इसमें base property होता है किसके लिए? ट्रांजेक्शंस के लिए. एसिड प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती है. ओके, एसिड प्रॉपर्टी इज नॉट सपोर्टेड. एसिड आप लोगों को याद होगा, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ये हम लोगों ने ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में देखा हुआ था. ओके, तो यहां पर क्या होता है? यहां पर आपके लिए बेस प्रॉपर्टी जो है वो होती है. तो बेस प्रॉपर्टी क्या है? दैट आल्सो विल सी. Now about consistency, consistency has what basically three types. Okay, आप देखोगे स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी यानी कंसिस्टेंसी हायर होनी चाहिए इन केस ऑफ योर आरडीबीएमएस, है ना. आरडीबीएमएस में कंसिस्टेंसी हायर होनी चाहिए. ट्यूनेबल कंसिस्टेंसी यानी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट चलेगी, ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट होना चाहिए, दैट इज कैसेंड्रा. एंड इवेंचुअल कंसिस्टेंसी यानी ठीक है, इवेंट वाइज यानी डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, कौन सी चीज के लिए नहीं चाहिए. दैट इज एक्चुअली सपोर्टेड बाय योर अमेजॉन डायनामो. सो माय डियर फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी हैज अ फैमिली लाइक स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी, ट्यूनेबल कंसिस्टेंसी एंड इवेंचुअल कंसिस्टेंसी. ओके, सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट. ये आप लोगों को इसलिए बताया गया कि आपको बेस प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी अच्छे से समझ में आएगी. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स व्हाट एग्जैक्टली इज this cap theorem with what base property. So let's focus, okay, so that you will understand the importance of cap theorem. तो कैप थ्योरम के बारे में मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंसी है, अवेलेबिलिटी है, पार्टीशनिंग है. तो ये हम लोगों ने लिखा. इन कैप थ्योरम क्या बोल रहा है? इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई तो एक होना चाहिए, दो होने चाहिए. यानी क्या? आइदर कंसिस्टेंसी या अवेलेबिलिटी, दैट इज CA. ओके, दोनों में से एक होना चाहिए. यानी क्या? मैं यहां पे बोल रहा हूं कि कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी है, तो इसका क्या बन जाएगा? CA. यदि अवेलेबिलिटी है और पार्टीशनिंग है, दैट विल बिकम AP, ये भी चलेगा. या फिर कंसिस्टेंसी और पार्टीशनिंग, ये भी चलेगा. तो ऐसे तीनों कॉम्बिनेशंस यहां पर हो सकते हैं. तो क्या क्या बन गया? CA बना, CP बना एंड AP बना. CA स्टैंड्स फॉर जहां पे कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी दोनों रहेंगे. ओके, यहां पे कंसिस्टेंसी भी रहेगा और अवेलेबिलिटी भी रहेगा. ओके, AP में अवेलेबिलिटी भी रहेगा और पार्टीशनिंग भी रहेगा. ओके, एंड इन CP में कंसिस्टेंसी रहेगा और पार्टीशनिंग रहेगा. अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि कौन सा डेटाबेस जो है या कौन सा डीबीएमएस, जो भी एग्जांपल्स आप लोगों ने देखे हुए थे, वो एक्चुअली कौन से है, वो कौन से डेटा मॉडल्स है, ये तो हम लोगों ने देखा. लेकिन वो सीए को सपोर्ट करते हैं, सीपी को सपोर्ट करते हैं, एपी को सपोर्ट करते हैं, ये देखना चाहिए. अब आप बोलोगे सर ये क्यों है, कैप थ्योरम की क्या जरूरत है? तो ये एप्लीकेशन वाइज जहां पे हायर कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, तो आइदर यू यूज सीए मॉडल और सीपी मॉडल, यानी कंसिस्टेंसी रहेगा ही रहेगा. यदि कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आप अवेलेबिलिटी और पार्टीशनिंग का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज एपी मॉडल आप लोग यूज कर सकते हैं. यदि आपको लगा कि कंसिस्टेंसी के साथ में अवेलेबिलिटी भी चाहिए, यानी हमेशा डेटा आप लोगों को एक्यूरेट भी चाहिए और डेटा अवेलेबल भी होना चाहिए, उस केस में आप लोग क्या करोगे? सीए वाला जो भी मॉडल है उसको क्या करोगे? एक्सेस करोगे. और आपको यदि लगा कि कंसिस्टेंट होना चाहिए और पार्टीशनिंग टॉलरेंस उसका होना चाहिए, तब जाके आप लोगों ने क्या यूज करोगे? यहां पर इसका यूज कर सकते हैं, दैट इज व्हाट योर सीपी का यूज कर सकते हैं. तो यहां पे आपको समझ में आएगा, दिस ए स्टैंड्स फॉर अवेलेबिलिटी, सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, पी स्टैंड्स फॉर पार्टीशन टॉलरेंस. और यहां पर आपको समझ में आएगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है सी और ए का, यहां पर कौन से डेटाबेसेस आते हैं. तो यहां पर कंप्लीटली, यानी जहां पे कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी की बात आएगी, वहां पे सारे के सारे आपके आरडीबीएमएस डेटाबेस जो भी है वो आ जाएंगे. तो दोस्तों आरडीबीएमएस डेटाबेस जो भी है, ये यहां पे आप लोगों को लगेगा. ओके, कौन से? आरडीबीएमएस डेटाबेस जो भी है वो यहां पर आएंगे. कहां पर? जो कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे. सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. यानी हमको क्या करना है? इनमें से कोई तो भी दो ही पिकअप करना है, ए और सी, ए और पी, और सी और व्हाट ए. ओके, तो सीए हम लोगों ने देखा हुआ है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे 5th के 5 यूनिट जो भी है वो पूरा आरडीबीएमएस के ऊपर ही था, जिसके ऊपर हम लोगों ने काम किया हुआ है.
नाउ नेक्स्ट इज व्हाट एपी, यानी क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ अवेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस। तो उसमें कौन से आते हैं एग्जांपल, तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा कि डायनामोडीबी, यानी मैंने आपको अमेजॉन का जो बोला था, ओके, डायनामोडीबी जो भी है वो क्या यूज करता है, अवेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लो जैसे मैंने आपको बोला था ना, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा ऐसे नहीं है, इवेंचुअल यानी लोअर साइड पर रहेगा, हायर साइड पे नहीं रहेगा। हायर साइड पे क्या रहेगा, अवेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं बोल रहा हूं। इज इट मेकिंग सेंस? लोकेश, लोकेश पिज्जा, प्रेजेंट सर। या सो समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं? हाँ सर। श्योर? श्योर सर। या, थैंक यू। ओके, thanks Lokesh, let me continue. So AP stands for availability and what, partition tolerance, जहां पे आपको ये समझ में आएगा कि DynamoDB, that is what the database of your Amazon, okay, वो यहां पर क्या करता है, AP को सपोर्ट करता है, जहां पे कंसिस्टेंसी लोअर लेवल पर रहेगा, हायर लेवल पर क्या रहेगा आपका, अवेबिलिटी एंड पार्टीशन टॉलरेंस। वैसे ही आप लोगों ने कैसेंड्रा जो भी है ये आपके सिलेबस में है, जो आप लोगों को स्टडी करना है। कैसेंड्रा इज आल्सो व्हाट, सपोर्टिंग एपी। तो कई बार शॉर्ट नोट आता है आप लोगों को कैसेंड्रा के ऊपर, तो जैसे ही कैसेंड्रा के ऊपर शॉर्ट नोट आएगा तो सबसे पहले आप लोगों ने लिखना चाहिए कैसेंड्रा इज कॉलम बेस्ड डेटा मॉडल, ओके, जो हम लोगों ने अभी अभी पहले देखा। ओके, सेकेंड पार्ट क्या आएगा, इट सपोर्ट्स, it has high availability and partition tolerance rate, whereas it supports eventual consistency, यानी consistency क्या है यहाँ पर, कम है। तो ऐसा आप लोग इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर आप लोगों को दिए हुए हैं, that you can study. Okay, now we have to focus on what CP, where consistency will be higher, partition tolerance will be higher, but availability will be what, lower. और इसके लिए यदि आप देखोगे तो बिग टेबल, ओके, ये बिग टेबल जो भी है ये गूगल का टेबल है। गूगल क्या यूज करता है, बिग टेबल का यूज करता है। मंगोडीबी आप लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। सो मंगोडीबी इज एक्चुअली व्हाट, इट इज हाई कंसिस्टेंसी, हाई पार्टीशन टॉलरेंस, बट लो अवेबिलिटी। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स यहां पर आप लोगों को दिए गए हैं, जैसे कि एचबेस भी एक है, जहां पे हडूप का डेटाबेस जो भी है ये भी क्या सपोर्ट करता है, कंसिस्टेंसी को हायर, और पार्टीशन टॉलरेंस को क्या करता है, हायर ये करता है। तो आपको ये डायग्राम जो भी है ये आप लोग यदि अच्छे से करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो भी हो क्या होगी, क्लियर होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझ में आएगा। कलर कॉम्बिनेशंस भी यदि आप लोग देखोगे प्रॉपरली तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे डेटा मॉडल जो भी है उसके टाइप्स दिए गए हैं। एक तो आपको रिलेशनल डेटा मॉडल, यानी रेड कलर का जितना भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ऑल रेड कलर इज अल्टीमेटली रिलेशनल डेटा मॉडल। ओके, देन व्हाट, ब्लू कलर की वैल्यू, यहां पर आपको दिखाई देगा, देखो ये की वैल्यू, सारा की वैल्यू पेयर्स है। ओके, उसके एग्जांपल्स आपको समझ में आएगा। फिर आप लोगों को कॉलम ओरिएंटेड जो भी है, ओके, या फिर टेबुलर, या फिर हम लोग कॉलम ओरिएंटेड जो भी डेटाबेस है वो कैसे ग्रीन है, जैसे मैंने कैसेंड्रा के बारे में आपको बताया था, इट इज कॉलम ओरिएंटेड। या यहाँ पर ये जो भी है ये भी क्या है, कॉलम ओरिएंटेड। या वर्टिका जो भी है वो भी क्या है, कॉलम ओरिएंटेड। वर्टिका इज आल्सो वेरी फेमस डेटाबेस। ओके, लाइकवाइज ब्लू कलर इंडिकेट्स दैट कि यहाँ पर ये जो भी ब्लू कलर है या मंगोडीबी आपका जो भी है ये सारा क्या है, डॉक्यूमेंट oriented. So my dear students, these two diagrams will cover you, this will entirely guide you what is exactly this particular part. I'm really thankful to the author, those who have prepared this, as well as the author, those who have prepared this particular diagram. I have given references of this particular diagrams into my last slide of what references, from which you can go with what the details. Now base property, and even at I button, whenever you will see this particular video, at I button I will add the details, references of this particular pictures, so that you can able to study very well, okay, while your examinations as well as your interviews. Now base property of cap theorem, तो हम लोग अभी तक जो भी डिस्कशन कर रहे थे डियर स्टूडेंट्स, ओके, लेट मी चेक आउट द टाइम। ओके, आई हैव टाइम। ओके, सो इन केस ऑफ बेस प्रॉपर्टी हम लोगों ने कैप थ्योरम देखा, और कैप थ्योरम में क्या होता है, बेस प्रॉपर्टी होता है। नाउ व्हाट इज बेस प्रॉपर्टी? ओके, सो बेस प्रॉपर्टी इज BA. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज एक्चुअली written. So here BA, then S, and then what, E, and this becomes what, base. Okay, this becomes what, base. So base stands for basically available, okay, soft state, that is scalable, then eventual consistency. So this you need to understand what is it exactly. Okay, base का long form मैंने आपको बताया, BA stands for basically available. So you can take either this B and you can take this A. This can be BA. Soft state,
Okay, this S is ultimately this S, that is soft state. Then eventual consistency, this E is actually what? Eventual consistency. Okay, so now you need to understand what exactly basically available. Nodes in the distributed environment can go down, but whole system shouldn't be affected. यानी क्या? Basically available का meaning क्या है? Available जो भी रहेगा, ये जो भी particular जब भी आपका distributed database में आप काम करोगे, एक से ज्यादा slides जब भी रहेंगे, एक से ज्यादा sites वहां पर रहेंगे, तो सारे के सारे sites at a time down नहीं होंगे, या ऐसे साइड इतने नंबर ऑफ साइड्स डाउन नहीं होंगे कि जिससे आप लोगों को कुछ अफेक्ट जो भी है वो आएगा. यानी क्या? एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? जीमेल का बेस्ट एग्जांपल आपको हमेशा याद रखना है. व्हेन यू आर यूजिंग जीमेल, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका जब भी जीमेल के कितने भी बहुत सारे सर्वर्स है, आपको एक्चुअली पता भी नहीं है कि आप लोगों का एक्चुअल जीमेल का जो भी डेटा है वो कौन से सर्वर पर स्टोर हो रहा है. बैंगलोर के सर्वर पे स्टोर होता है, अमेरिका के सर्वर पे स्टोर होता है, क्या चांदवड़ के सर्वर पे स्टोर होता है, आप लोगों को पता नहीं है. बराबर है? तो वो पता रखने की जरूरत भी हम लोगों को नहीं है. तो बेसिकली अवेलेबल का मीनिंग क्या है? एनी टाइम इट इज अवेलेबल. आप कभी भी उसको ओपन करोगे, ये अवेलेबल होगा. भले ही चांदवड़ का सर्वर फेल हो जाए, भले ही बैंगलोर का सर्वर फेल हो जाए, आपको डेटा अमेरिका से मिलता रहेगा. तो यहां पर इसको बोला जाता है बेसिकली अवेलेबल. नेक्स्ट पार्ट इज सॉफ्ट स्टेट, दैट इज स्केलेबल. स्केलेबल यानी क्या? द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड डेटा चेंजेस ओवर द टाइम. यानी क्या? आज की डेट में जैसे जैसे डेटा बढ़ते जाएगा, आप देखिए आप ऑनलाइन की केस में बहुत सारे लोग जूम के ऊपर आ गए, बहुत सारे लोग ईमेल का इस्तेमाल करने लग गए, बहुत सारे लोग ऑफिशियल यूज व्हाट्सएप का करने लग गए, फेसबुक का करने लग गए. ऐसे बहुत सारे लोग थे कि जो कभी ऑनलाइन आए हुए नहीं थे, वो सभी के सभी आज की डेट में ऑनलाइन आ चुके हैं. तो क्या हो गया? अचानक से ऑनलाइन का मार्केट बढ़ गया. तो यहां पर इसको क्या बोला जाता है? स्केलेबल. यानी क्या? ऑटोमेटिकली ये क्या कर लेगा? उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि स्केलेबिलिटी यानी सॉफ्ट स्टेट, ये वाला ऑप्शन उसका क्या होता है? अवेलेबल होता है. Now the last one is what? Eventual consistency. इसका मीनिंग मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है. Given enough time, data will be consistent across the distributed system. यानी क्या? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपका डेटाबेस क्या रहेगा? कंसिस्टेंट रहेगा. 100% रहेगा इसका गारंटी नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डेटाबेस क्या रहेगा? आपका कंसिस्टेंट रहेगा. दिस इज नोन एज योर बेस प्रॉपर्टी. बेस प्रॉपर्टी एग्जामिनेशन में आप लोगों को कई बार पूछा गया है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मायने रखता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. तो कैप थ्योरम में बेस प्रॉपर्टी आती है. ओके, कैसे आती है? तो यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबिलिटी अवेलेबल है. ओके, ये दोनों चीजें अवेलेबल है. ये देखिए यहाँ पे दिस इज अवेलेबल. ओके, दिस इज व्हाट? कंसिस्टेंसी. ये दोनों चीजें यहाँ पर अवेलेबल है. और स्केलेबिलिटी यानी क्या? आप लोगों को जो भी डेटा है, कितना भी इसको क्या होगा, जब भी डेटा कितना भी बढ़ते जाए, ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो भी उसको सपोर्टिंग एनवायरनमेंट जो भी है, वो भी क्या हो जाएगा? उसके साथ में बढ़ जाएगा. दिस इज नोन एज योर बेस प्रॉपर्टी ऑफ कैप थ्योरम. माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इतना ही पार्ट कई बार आप लोगों को 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है. ये एक्सपेक्टेड है कि जब भी बेस प्रॉपर्टी आएगा, पहले कैप थ्योरम जो भी है उसको आपको ड्रॉ करना है, उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है, यानी सी, ए और पी आपको एक्सप्लेन करना होगा. एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को डायरेक्टली ये वाला पार्ट जो भी है एक्सप्लेन करना है. दिस इज एक्सपेक्टेड फॉर 4 मार्क्स. Okay, so this is what all from my side today in today's session. Okay, let me end up this session with the difference between SQL and no SQL. Okay, so SQL, it is relational database management system, that is RDBMS. Non-relational or distributed database system, or I have already told you the long form of what? No SQL. Okay, no SQL यानी क्या? Not only SQL. Okay, it is what? Not only SQL. Okay, so you need to understand कि ये सिर्फ SQL नहीं है, SQL के अलावा भी और बहुत ज्यादा है. So I can say all the power which is available with SQL is also available with what? No SQL, and no SQL is more powerful than what? The SQL. So that you need to understand. Okay, so another part, these databases have fixed or statics or predefined schema. यहाँ पे एक predefined schema होता है, fixed predefined schema रहेगा. Okay, but here it is basically a hierarchical storage. यानी क्या? जो आप लोगों को, जैसे आप लोगों को यहाँ पर फिक्स है कि 4 कॉलम है, रोल नंबर है, नेम है, सिटी है, मार्क्स है, इतने ही आप लोगों को दिए जाएंगे इन केस ऑफ RDBMS. ओके, और आपको यदि कोई कॉलम ऐड करने हैं, जब तक हम लोग DDL कमांड यूज करके, अल्टर टेबल करके, उसको जब तक कोई नए कॉलम ऐड नहीं करते, तब तक डेटा उसमें नहीं डाल पाओगे. ओके, बट नो SQL इन दैट पर्टिकुलर केस इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल. जितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको ऐड करने हैं, जितने नंबर ऑफ फील्ड्स आपको ऐड करने हैं, आप रन टाइम पे ऐड कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग और विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स स्ट्रक्चर. दैट्स द ब्यूटी ऑफ नो SQL. These databases are best suited for complex queries. Complex queries के लिए ये वाले database जो भी है, SQL databases, ये बेहतर होते हैं. These databases are not so good for what? Complex queries.
Okay, it is normally vertically scalable and it is what horizontally scalable. Vertically scalable और horizontal scalable का एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा. आप सभी लोग सी पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस पढ़ते हैं. ओके, आप सी पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, पाइथन पढ़ते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस आप लोग पढ़ते हैं. दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट. वर्टिकल डेवलपमेंट यानी क्या, आपने सी पढ़ा और सी के ऊपर क्या कर दिया, मास्टरी कर दी. सी के ऊपर क्या किया, मास्टरी किया. आप लोगों ने क्या किया, जावा पढ़ा और जावा के ऊपर क्या कर दी, मास्टरी कर दी. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काफी अच्छा मास्टरी करते हैं. दिस इज नोन एज वर्टिकल डेवलपमेंट. तो ऐसे ही यहां पर क्या होता है, स्केलेबिलिटी जो भी होती है वो वर्टिकल स्केलेबिलिटी भी होती है, यानी एक ही डेटा में बहुत सारा इंफॉर्मेशन को स्टोर करो. और यहां पर क्या है, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी यानी क्या, आपका डेटाबेस जो भी है ये तोड़ तोड़ के डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा. दैट इज अल्टीमेटली व्हाट, स्केलेबिलिटी, वर्टिकल एज वेल एज व्हाट, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी. Now it's time for quiz. So my dear students, be ready for the quiz. मैं आपके सामने पोल जो भी है वो क्या कर रहा हूं, ओपन कर रहा हूं. Okay, so I'm launching the poll. Okay, you have to give the answers to this particular poll. Poll is now in front of you. I have launched the poll and I'll give you 1 minute for the same. Okay, last 5 seconds, and then I'll end up with what the today's session. If you have doubt, you can please ask. I'm so sorry that I have not created the link for YouTubers. Okay, very very sorry. I was not aware that कि YouTube के ऊपर सभी रहेंगे, क्योंकि 100 के स्टूडेंट 100 का ही स्ट्रेंथ है. अभी IT के बच्चे नहीं है, तो मुझे लगा सारे कंप्यूटर के बच्चे जूम में आएंगे, ऐसे मुझे लगा था. ओके, सो बट डोंट वरी, मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम जो भी है वो दूंगा. फिलहाल अटेंडेंस का लिंक मैंने दोनों जगह पे शेयर किया है. आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑफ अटेंडेंस. आई विल रीड द क्विज फॉर यू ऑल. ओके, आई एम एंडिंग द पोल नाउ. So out of 37 students, 35 students have attended the poll. Okay, let me tell you, the very first question was no SQL stands for. Okay, options diye the, no SQL, not only SQL, none of the above. So right answer is not only, that NO stands for not only SQL. Okay, 89% students have given right answer. Hearty congratulations to you. Second question was MongoDB is, first option, document oriented, column oriented, graph based, or key value pair based. Okay, right answer is document oriented. So MongoDB is document oriented database, and you all should be aware about this, that this document oriented 69% students have given right answer. So my dear students, जो भी MongoDB आप लोग पढ़ रहे हैं, जिसके कमांड्स आप लोग यहाँ पर अभी फिलहाल परफॉर्म करके उसके ऊपर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, that is actually document oriented database. So this is all from my end. I have shared the link of attendance with you. I hope you will mark your attendance. If you have doubt, you can please ask your doubts on chat window, or those who are on Zoom, you can unmute yourself and you can ask the doubt if you have. Dear students, you can ask the doubt if you have. Okay, let me tell you very very important announcement regarding your examination. एग्जाम में आज तक का आप लोगों को मैं पूछूंगा. आज तक का यानी क्या, आज तक मैंने जितना सिखाया हुआ है वहां तक का, यानी यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6. अभी तक का जो मैंने सिखाया यूनिट नंबर 6, इसके ऊपर मैं 10 क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं. ओके, और यूनिट नंबर 4 और 5 पे भी 10-10 क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू बेस्ड. So my dear students, your examination will be what MCQ based, and it is scheduled from 1st December to 5th December. तो DBMS का पेपर 5th December पर रहेगा.
सो डियर स्टूडेंट्स, मीनवाइल मैं आपका ये जो भी सिलेबस है ये कंप्लीट करूंगा। ये काफी छोटा यूनिट है, इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके, सो आज भी मैं दोपहर में लेक्चर लेने वाला हूँ डियर स्टूडेंट्स। डोमसे सर का जो लेक्चर है 1:30 PM का, 1:20 PM का, वो मैं लेने वाला हूँ। आई होप आप सभी लोग अटेंड करोगे। डू यू हैव एनी डाउट? If you have doubt, you can raise your doubts on what chat window, or you can unmute yourself. If you have doubt, you can ask. Those who are on YouTube, you can ask your doubt on chat window. Fine. Thank you, my dear students. See you at 1:20 PM